See, the sole motto of today's session is just one, and this is how to make the mains examination preparation more comprehensive and more outcome oriented. The reason behind what I'm trying to say, that more comprehensive, more outcome oriented reason, if you revisit your preparation, you will find that most of the time we are talking too many things. Even the candidates, those who have already appeared in the preliminary examination, main examination, or preparing for last, you can say 1 year or 2 years, or even more than that, you will find that they are not very sure of one thing, that their preparation is done or not. Because it's a continuous process. But then question is you cannot make everything endless. Keep on going. This approach is very dangerous. To an extent, I don't have any hesitation to accept that coaching institutes are responsible for this. The role, you can say, the coaching institutes might have played or could have been, they failed to do it. The reason is, all the time we are talking about some or other things, but it will not work. It's not basically about talking XYZ. It's basically about one and only one thing. Can you become master of your preparation? Can you become master of your preparation in the sense that unless you start measuring everything in terms of the outcome, you will find that you are doing some or other things, but you are not very sure whether you are moving or not, whether you have done something or not. So some kind of confusion, hollowness, and a sense and a kind of insecurity is always there. I always say that I interact a lot with the students. बहुत ज़्यादा आज के डेट में भी अगर देखो तो कॉपी करेक्शन में मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ. What I've realized after interaction with this that somewhere there are many gaps. Probably if we could help you to, you can say, fix it, then it's possible that outcome may be different. होगा नहीं होगा क्या होगा, प्लान बी, ऑप्शन बी इन लाइफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, it's not a question. Why it's not a question? Because if you want to continue, let's continue. If you don't want to continue, quit. Why I say so? Because unlike some 10 years or 15 years before, the case of the today's case is much different. Probably today's time, if you look at, if you have courage to take initiatives in life, there are 1,000 other options are available. आज से 20 साल 25 साल पहले ये ऑप्शन नहीं था. प्रोफेशंस और करियर के स्ट्रीम्स बहुत ही स्ट्रेट जैकेट थे. It was very straight jacketed. Nowadays it's not the case. So it's not, because why I am saying all these things, because in the last few months I have realized that maximum question which I am facing from the students, they are not very sure that after this prelims what they should do. Why I am saying this? And then they are asking that what should be the next course of action. See, next course of action is, as far as UPSC is concerned, just you have to develop a mastery over the syllabus, nothing else. Because you don't know, I don't know, nobody else, no one knows what kind of pattern they will follow next year. We can talk whole day, we can talk a lot on the social media, and this is what we do also. But it will not change the reality. We can create narratives, we can talk, we can forward, we can like, we can dislike, सब कुछ हो सकता है, but we don't know exactly what is going to happen, except that we should develop a mastery over the syllabus. Now, how to do all these kind of things, this is what the session is for. We'll take approximately, you can say, some 40-45 minutes here, and then we'll go for question answer session. A lot of students are there. Huge number in online, so we'll take the question answer session also, and then we'll go for it.
Fine. So it's all about mastering GS. Advanced. Fine. So this session, this course is not for freshers, to be very fair. Fine. So anything I'm going to talk, it's basically that how to fix certain things and make your entire preparation, you can say, more outcome oriented. How to do it. This is what the idea of the session is. Fine. And then we'll go for the question answer session also. Fine. Let me begin with one thing. The first thing first, because whatever we say is not enough. The ground reality comes with the cutoff. Fine. Whatever we talk about the UPSC is not enough. It's not the final thing. वो कभी हो भी नहीं सकता. जो यूपीएससी ने दिया है वही रियलिटी है. रिजल्ट हो, सिलेबस हो, पीवाईक्यू हो, कट ऑफ हो, जो भी हो, आप उसकी इंटरप्रिटेशन चाहे जैसे भी करें. फॉर एग्जांपल यूपीएससी ने लास्ट ईयर भी अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी, देखा होगा आपने. फाइन. और आपने अगर उस रिपोर्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो वो आपने देखा होगा मैसिव सिलेक्शन जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं है. इंटरेस्टिंगली तो होता क्या है कि जैसे कोई टॉपर हो गया, अब उसका कोई बैकग्राउंड है तो एक नैरेटिव बनती है सोशल मीडिया में. इट क्रिएट्स नॉइज, इट बिकम्स वेरी लाउड, इट बिकम्स वेरी लाउड एंड सो लाउड दैट यू स्टार्ट सेल्फ डाउटिंग कि अरे यार हम तो पीछे छूट गए, मतलब वी हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड, अब क्या होगा. लेकिन अगर उसी रिपोर्ट को देखो, एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज इट्स ऑलरेडी इन द पब्लिक डोमेन एंड इट्स यूपीएससी's report. It's a UPSC's report where they have given a very detailed, I don't know whether you have gone through or not. जो यूपीएससी की रिपोर्ट है उसमें से किस अटेम्प्ट में कितने सिलेक्शन हुए, किस ऑप्शन में कितने सिलेक्शन है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर. यूपीएससी हैज पब्लिश्ड एंड द डिटेल्स आर ऑलरेडी देयर. इफ यू लुक एट द कट ऑफ इज समवेयर 38 to 44% मैक्सिमम. इन द मैक्सिमम लास्ट 10 years की मैं बात कर रहा हूँ. Where you will find the cutoff has gone as high as 46% also in 2016 or 17, and as low as 34 or 35% also in 2013 or 14 somewhere. So if you take the last 10 years margin, you will find that this is a range where most of the years means cutoff varies from year, not final, means cutoff 38% to 42%. Now in paper 1, 2, 3, 4, optional XYZ, you will find there is a very popular narrative that if you go for optional ethics and essay, then mains is done. This is another propaganda which is very damaging, very, very damaging. Though I take that area, but still I am saying it's very damaging. It's very damaging. It's killing students. As you can say, their chance. The reason is basically, if you look at the main examination, in the main examination and you scan last 4, 5, 10 years mark sheets which is already available in the social media and at the different platform, you will find somewhere, if you scan everything and if you go by the configuration of the marks, what you will learn that main examination is all about one and only one thing, that every question you are fighting. And in every question, you can say, the fight is for 1 or 1.5 marks. So if you look at the configuration of marks of the students of last 10 years, including all the toppers, you will find that somewhere they are here, 30%, 35%, 40%. Forget about the toppers and all. I'm not talking about जिसका 45% आ रहा है या 48% आ रहा है somewhere. Now, given the scenario, I have a question. The question is, why it is so that most of the candidates are falling at a particular, you can say, band of marks, and that is 35% of the marks. The question is very simple. Why? Anytime if you visit me after this session, I will show you the copies of the candidates, those who are writing mains this year also. Fine. And it's nothing is secret. We used to upload after the result on the websites also. Most of the time, you will find that their even examples are same.
I repeat my sentence. Even examples are same. Yesterday I was correcting copy and I wrote in remark in a copy that it's too much about the Gandhi, please stop it. क्योंकि मैं ज़्यादातर लोगों को देख रहा हूँ कि और क्लास में कई बार मैं मजाक में कहता भी हूँ इन द लाइटर नोट दैट तुम अपना हाथ दिखाओ मैं बताता हूँ तुम्हें मार्क्स कितना आएगा क्योंकि सबकी कॉपी एक ही जैसी है। अभी इस सेशन के बाद ही आजा मेरे साथ बैठो मैं दिखाता हूँ सबकी कॉपी एक ही जैसी है। मैं ये कह रहा हूँ कि हाउ इट इज पॉसिबल व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज if you look at last 4-5 years paper, you will find this paper is little bit shifting towards more information oriented to the analytical paper. For example, when I say more on information to the analytical, even in the geography, which is very rich in information. Fine, paper 4 की तरह abstract ideas तो पूछते नहीं, पूछ भी नहीं सकते, ना ही आप अपनी opinion दे सकते हैं उसमें. Opinion in the sense, अगर वो प्लेट टेक्टोनिक या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पूछते हैं यू कैन नॉट थ्रो योर आइडिया ना यार। और विगनर का है तो है थ्योरी, उसकी क्रिटिसिज्म भी है तो वो एस्टेब्लिश्ड है, वहीं से आप पिक करते हो और यहाँ चिपकाते हो, यही तो करते हो ना। फाइन, बट दिस इज नॉट यू डू इन इवन इन द पेपर 2 और लार्जली इन द पेपर 4 यू डोंट डू, बट देयर ऑल्सो यू विल फाइंड दैट लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन हैज शिफ्टेड टू द ह्यूमन इकोनॉमी, फ्रॉम फिजिकल टू ह्यूमन इकोनॉमी, वेयर your perspective, opinion, the way you see this world matters a lot. It's not, because it's not only about the physical science. It's about changing, and it's about changing so many things. For example, in today's world, the location theory is completely different the way we have been seeing in the 50s or 60s or 70s or 80s, because so many things has been changed due to globalization, and there are so many things is going to be changed because of the AI and the technology. In the coming days, it will happen. Fine, this is. But even then, you can say the answers are same. Answers are same. So the point number 1 is this, basically. Now, so basically, if you look at the main examination, I always say expression is the output. Expression is the output. What you do in those 20-21 hours, because you write paper 1, 2, 3, 4. So what you do is final. Rest is gossip. बातचीत चाहे जितना भी कर लो वही फाइनल है. Fine. So basically the point is, can we do everything in a framework? In a framework, can we design a framework where we can measure our preparation? This is what the sole idea of this session is. Measure in the sense, you know dot that this is where I want to focus. It's not about the concept build कर लो और ये कर लो. No, not at all. Until unless you are able to make a framework where you understand each and everything in the very structured way, your efforts are generally, you will find, in a very general effort. You are putting your hard work. You are doing for 8 hours to 10 hours to 12 hours. Somebody claims that they dedicate 15 hours, but I am not very sure how they do it, because that is beyond the capacity or imagination of mine. So I can talk only about 6 to 7 hours maximum. This is my bandwidth. So I can talk about my bandwidth is this much only. उसके बाद यहाँ घुसता नहीं है, वो block हो गया उसके बाद. So I also want to meet the person who is really giving some 14-15 hours. So if you have some in the group, please introduce me. I want to learn a lot. क्योंकि उससे थोड़ा मुझे भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक सुना ही है, देखा नहीं है, और ये बचपन से सुन रहा हूँ. क्योंकि हर मोहल्ले में ना कोई महेश, सुरेश, मनोज, सरोज, राजेश ऐसा होता है जो एग्जाम्पल बन जाता है, और गार्जियन उसी का एग्जाम्पल पूरा मोहल्ले को देते रहते हैं, और हर गार्जियन उसी का एग्जाम्पल देता है. देखो महेश 15 घंटा पढ़ता है, तुम सारा दिन खेलते रहते हो. लो यार, महेश मेरा फ्रेंड है, हमको पता ही नहीं है 15 घंटा पढ़ता नहीं पढ़ता, हर गार्जियन को पता. बट लेट्स कम बैक टू द पॉइंट. So this is what we are going to do, that how to create a framework where we can measure everything. So let's begin one by one without putting so much of the talk. So if you look at your preparation, entire preparation will move around 4 things. Fine. So the first thing first is all about the concept. Needless to say. Second thing, I will go into the detail of everything. Second is basically the integration.
I'm not talking about the integrated preparation sort of thing, rather the integration of the different component that I will talk. Fine. Third, the very important thing is retention, and retention does not mean notes XYZ. Retention is basically that how much structured, organized you are in, and how good you are in terms of being responsive, very fast, very quick, what quality you can sustain. That is called retention. That is called retention. Because if you, so many times I told on the public platform also that my learning with the students, those who qualify this examination already in the service, is one and only one thing, that somehow they are able to sustain, the you can say the quality of the answers. They are more organized. And on this occasion, again I am going live, I say that in the last so many years I have hardly met one or two person with whom I can say confidently there is extraordinary in terms of content. Otherwise I never ever met anyone who qualified this examination and they are extraordinary in content. They are extraordinary in managing those 3 hours, nothing else. मतलब मुझे बात करके कभी इससे नहीं लगा कि यार क्या कंटेंट है, क्या कंटेंट है, मतलब ऐसा बहुत रेयर ही हुआ. कुछ स्टूडेंट्स हैं बहुत कम है. फॉर एग्जांपल आयुष्मान भारत का हेड है अभी रोहित, मुझे बात करो लगता है कि यस पार एक्सेलेंस. अर्नब है अजमेर में पोस्टेड है, मुझसे बात करता हूँ तो लगता है कि यस पार एक्सेलेंस, लेटरल रीडिंग भी इतनी है और है उसमें से, और वो अपनी सर्विसेज में भी शाइन करते हैं, अपने सर्विसेज में भी वो शाइन करते हैं. बहुत कम एज में रोहित इज हेडिंग आयुष्मान भारत, पूरी इनिशिएटिव इज द कोऑर्डिनेटर, और बहुत कम एज में है, बहुत कम एज में है. क्योंकि सिस्टम को भी लगता है कि यार कि ही इज ब्राइट, ही कैन डिलीवर, ही कैन डिलीवर. सिस्टम में भी तो चाहिए ना डिलीवरी के लिए आदमी. कितना आदमी चापलूसी करके ही चलाएगा, क्योंकि सीनियर को भी तो जवाब देना है ना. आप कुछ तो काम करने वाले लोग होने चाहिए, तभी तो जो बाकी चमचे हैं उसी पे तो पलते हैं, काम करने वाले पे. क्योंकि वो रहेगा तब इसकी सर्वाइवल भी है. अगर सिस्टम में 100% चापलूस और चमचे हो गए तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा. तो जो तुम 80-20 पॉपुलर नैरेटिव सुनते हो ना, तो 20% यही लोग हैं जो काम करते हैं. बट एनीवे, सो थर्ड एंड फोर्थ इज स्ट्रक्चर. So this is structure does not mean presentation. You will find that the way you talk in the peer group, largely you can say you talk. Just a moment. You talk about presentation part. If you talk in the peer group, largely you talk about the presentation. As if you have to design a bouquet sort of things. But it's not like that. A structure is not about presentation, mind it. I will come to it. So these are the 4 things. These are the 4 components which helps you to, you can say, sail through in the main examination. And this is what exactly I want to convey. That unless we do everything in a very, very structured manner, can we measure it? Can we measure even the concept? Can we measure expression, etc.? कि हमको काम करना कहाँ है? Where I need to work, very specific. It will not work. The reason I tell you that many times you go for answer writing, and answer writing these days is a buzzword which is very popular. ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज बच्चा जन्म लिया और चिल्ला के कहने लगे कि आंसर राइटिंग, तो उसको लगेगा कि ये सिविल सर्वेंट बनेगा. He or she will be civil servant. Because he knows the exact demand. उसको इस एग्जाम की exact demand है. So answer writing is become so popular these days. So, but at the same time, you also know that often after writing so much, taking admission in the test series or taking questions from the photocopy shop, PDF, Telegram, download, you feel frustrated that nothing is happening. You are just becoming or doing something which is very popular and customary. So ritual है. कुछ उसी तरह का रिचुअल है कि तुम एग्जाम देने जा रहे हो, पीपल का पेड़ देख लिए तो नमस्ते कर लिए कि भगवान आज निकल जाए. आज तो लक्ष्मीकांत से ही पूछना, कहीं इधर उधर से मत पूछना कि वो 4-5 बार पढ़ चुके हैं उसको. सो दिस इज व्हाट द रिचुअल इज बेसिकली. यू ऑल्सो डू कि हाँ ठीक है 5 क्वेश्चन लिखा, डेली लिख रहे हैं,
कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, लेकिन कर जरूर रहे हैं, फाइन। तो कुछ उसी तरह से है, जैसे हम भी पिछले 10 साल से प्लान बना ही रहे हैं कि यार कि एक दिन तो सुबह घूमने जाऊंगा ही जाऊंगा और वेट लूज करूंगा। सो ये लास्ट 10 साल का एजेंडा है मेरा, अभी शुरू नहीं हुआ अलग बात है, एजेंडा है बराबर। उस चक्कर में 2-3 जूता भी खरीद लिए कि थोड़ा मोटिवेशन आए, तो मतलब सुबह उठने के बाद गिल्ट फील होकर क्या कर रहे हो यार, जूता में पैर ही तो डालना और जाके घूम के आओ। फिर ये लगता है चल कल देख लेंगे यार, छोड़ो कल से करेंगे। वो कल के चक्कर में 10 साल हो गया। सो इट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज लाइफ इज दिस ओनली। सो माई टेस्ट सीरीज इज देयर। Let's come to the point. So, first thing first, how to make everything in the framework. This is what the agenda of the discussion is. To be very precise, the agenda is very simple. Again, I am saying you that how to make everything measurable in a framework. So, let's start with the concept, because concept is something without which you cannot do anything. You cannot do anything. चाहे बात जितना भी हम कर ले. So when we say concept, the first thing first, that whatever you read, either NCERT or advanced or current affairs or XYZ, whatever you read, any topic, when we say concept, the word when we use, it simply means there are certain fundamental building blocks of every topic. Fundamental building blocks of every topic. Every topic means every topic. It has to be. Fine. Now the question is, how do we need to build it? हम इसको अगर बनाना हो तो हम कैसे बनाएं किसी भी टॉपिक को? Fine. The first thing first, you will have to start measuring any topic with the meaning. Meaning simply means the big picture. For example, let's talk about development. Fine. It's very easy to talk about development. We talk so much about the development these days, economic development, social development, and this, that, in the context of climatic change or anything else. The first thing first, whenever you start, see, we have to reach to, you can say, this thing here, and okay, fine. We have to reach, sorry, here, expression. When we'll finish the session, you would be in a position to understand what exactly is the requirement in terms of expression, because expression is output. Fine. I say expression is output. This is what we have to understand, that expression is output. And what does it mean by it? Very precisely, very direct. So what does it mean by meaning? What does it mean by big picture? That when you go for mains examination, unlike the preliminary examination is more about the you can say certain facts, key concepts, but how it operates in a specific context. But unlike, and that's why it's objective. Your opinion doesn't matter. But here main examination is all about your opinion, perspective, etc. That how do you see anything? Fine. So look at the development word itself. When we say development, it's basically the big picture, in the sense, the big picture, what you have to understand and what you have to answer is in and around the 3 questions. What is development? Development for whom, and development at what cost? Development at what cost? So if you know that this topic, when we read, the big picture is this, that I should be in a position to understand this, because it's very easy to talk about development, but somewhere we will have to fix frame, na? कहीं तो हमें तो fix करना पड़ेगा ना, because you have to write answers. It's not about degree and XYZ or research anything. So whether you talk about this
or you talk about the economic geography, or you talk about, let's say, governance, somewhere you need to understand this, that you should talk about certain things. For example, if you look at, when we say that meaning and the big picture, you will have to understand, for example, democracy. I'm picking certain very, you can say the key idea, key concepts, which is very easy, and you talk day and night. You talk day and night. But even in democracy, you will have to understand what the big picture means in the context of this examination. Big picture here simply means, the first thing first, that you will have to set a scope of the topic. Until unless you set a scope of the topic, you will keep wondering, you will keep wondering, you will keep wondering, you will keep wondering, and you don't know to what extent you have to go. तो कहीं ना कहीं तो एक frame होना चाहिए कि yes, this is what we should know. For example, even if you talk about, you can say, the democracy, you should understand that it's all about popular participation, number one. It is happening, not happening, that's a different thing. So it starts with the popular participation. It simply means equality. It simply means freedom. Fine. It simply means rule of law. It simply means accountability and transparency. Minimum चीजें तो होंगी. So when you understand democracy, or when you try to understand democracy, you should know that these are certain aspects around which I have to look at this topic or subject or anything else. Anything else. This is how you start. Anything means anything. 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 I'm talking about the geography, I'm talking about the governance, I'm talking about the ethics also. For example, if you look at the paper 4, ethics, the first word is essence of ethics in the syllabus. The first word it is written in the syllabus. The first topic is essence of ethics. Now, with full responsibility, I am saying on record that until unless you understand the essence of ethics and human values, you cannot answer a single question in ethics. You will write whatever you wish. You cannot write quality answer. You cannot write quality answer. So the essence of ethics basically talks about one thing, and one and only one thing. What is the big picture of the ethics and why ethics? It talks about why ethics. So it basically talks about that everything related to the decision making. Everything related to the ethics in practice rather than the philosophy. And so if we are not doing this, it simply means we are missing something. This is what I want to convey. So when you say concept, it simply means this. If you are not doing this, either in the geography or governance or ethics or anything else, you are missing some or other things. So simply means that you are capturing the information through any source, be it like class like this, or any video for that matter in the YouTube, or you can say for that matter any coaching material or books or anything. So it's basically that you are doing some kind of content procurement. So my point number one, concept, since it does not mean content procurement, and content procurement is endless. This is not the way to do good in main examination. Concept simply means start with the one thing, and that is the meaning, the big picture of any topic. It is the first thing first that you have to understand, number one. Number two, then it goes to why I am talking about number one, number two, because this is the whole idea. When I finish this session, you can count on your fingertips that where to work, where precisely you need to work. This is what the whole idea of this session. Because the whole idea is not to talk about the main examination, the importance or civil, not at all. Not at all. Not at all. वो purpose नहीं है. वो बिल्कुल भी purpose नहीं है. जब ये session खत्म हो, तो very fine takeaway is that you should understand that how you are going to measure your preparation, where you are leading, how you shift from input to the output. और जब हम कहते हैं तो वो मेजर कैसे करेंगे साहब? मेरे लिए भी कहना बहुत आसान है, बट द क्वेश्चन इज कैन आई हेल्प टू डू समथिंग ऑन द बोर्ड? क्या हम ये दिख सकते हैं? क्या हम ये कर सकते हैं? By lecturing it will not serve the purpose. So onus lies firstly on me to prove it that yes, there is some possibilities where we can shift from input to output, we can measure and we can understand what does it mean by being specific.
क्योंकि ज़्यादातर लोगों को देखो ना आप, जो लोग भी कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स हैं, दे आर वेरी यू कैन से दे आर एट पार. वेरी सॉरी टू से, बट इट्स रियलिटी दैट एवरीवन इज नॉट इन रेस. अगर 12 लाख लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं या 13 लाख कर रहे हैं और 5 लाख या 6 लाख अपीयर हो रहे हैं, तो सब तो रेस में नहीं होगा ना. रेस में तो कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स ही होंगे, और कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स में कम से कम 2 चीज़ें तो कॉमन है. यू कैन नॉट फाइंड सुपीरियरिटी इन दैट. नंबर 1, एज फार एज हार्ड वर्क इज कंसर्न, ऑल आर वेरी डेडिकेटेड एंड कमिटेड. तो आप ये हार्डवर्क के बेसिस पे तो नहीं बीट कर पाओगे. तुम 10 घंटा कर रहे हो, वो 12 घंटा कर रहा है, वहाँ नहीं बीट कर पाओगे. नंबर 2, इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन नॉट बीट, बिकॉज एवरीवन इज एट पार. जितना तुम्हारे पास है उसके पास भी है. तो ये 2 चीज़ तो कॉमन है. तो अगर आपको लगता हो कि नहीं हार्डवर्क के बेसिस पे कर लेंगे हम, दैट्स गुड, दैट इज नीडेड. बट द क्वेश्चन इज दैट इज नॉट द सोल क्राइटेरिया टू विन, बिकॉज एवरीवन इज डूइंग द सेम. Everyone is doing the same. Fine. So here, the second most important aspect is basically your ability to break down the topic. Break down the topic. Break the topic. Fine. Let's take a very popular topic itself. Governance. Fine. The question is here, when you break down, you have to two things. Number 1, the issues, and then the perspective. Very simple. Issues and perspective. In the sense, what are the issues, and then how do you see it, and then how others are seeing. This is what you take from the opinion page, editorial page, etc. क्योंकि उससे आप पर्सपेक्टिव लेने की तो कोशिश करते हैं ना. उसमें इंफॉर्मेशन बहुत नहीं होती है, पर्सपेक्टिव होता है. दिस इज व्हाट यू डू. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू टॉक अबाउट दिस यू कैन से द रिलेटेड इश्यूज आल्सो इटसेल्फ. फाइन. इफ you talk about governance these days, you will find that there are n number of topic these days, n number of topic. So at least 20-25 subtopics are there which helps you to identify and list the issues. List the issues. And issues are the prism or the lens through which you see certain topic. कि यार कि ये चीज़ें मुझे देखनी है, ये चीज़ें देखनी है. Fine. For example, अगर हम सोशल मीडिया के टाइम पे ही देख लें आज, इफ यू टॉक अबाउट द गवर्नेंस इन टुडेज कंटेक्स्ट, इफ आई हैव टू स्टार्ट, I will not talk about accountability and all transparency, all you know. Probably I will start with one thing from where the question is likely to happen, is disinformation as misinformation. This is which is very important part of it. Disinformation and informations. So when I say that misinformations, that it's a very important aspect to manage the governance, part of the governance. Now, it's very important to look at this, that government itself is a part of this misinformation. Propaganda है ना उसका part. Propaganda क्या है? और जब मैं propaganda कह रहा हूँ तो 2024 की बात नहीं कह रहा हूँ मैं. Look at. So I'm not talking about this 2024, जो कि शुरू हो चुकी है अभी. Fine. तो already शुरू हो चुकी है. फाइन. अभी थोड़ी इंटेंस होगी, अभी अक्टूबर के बाद इंटेंस हो जाएगी, काफ़ी इंटेंस हो जाएगी. फाइन. सो लुक एट द वे ट्रम्प डील्स विद द मैटर, इंफॉर्मेशन एंड मिस इंफॉर्मेशन. फाइन. वी टॉक अबाउट द पोस्ट ट्रूथ ना. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस वर्ड पोस्ट ट्रूथ. यू विल फाइंड द प्लेस हियर, पोस्ट ट्रूथ. It's basically about the misinformation, where post-truth simply discards the truth and the facts. So it tries to play with the emotions. So there is no truth at all. This is what the post-truth is. Fine. So how it plays. Now the point which I'm trying to say, why I'm talking about this, because generally when we talk about any concept, anything, until unless you are able to list the subtopic, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, you cannot do anything. And this is why when I say in this course also that there are 500 topics,
We have measured that approximately 600 topics cover the entire paper 1, 2, 3, 4. Though this program also includes the essay part, but it's approximately, क्योंकि हम लोग तो syllabus पे लगातार काम कर रहे होते हैं, and you might have seen कि हम syllabus download भी बहुत कराते हैं, and it's quite popular also. हम लोगों ने जब मेजर किया तो मुझे लगा कि 600 टॉपिक्स मेंस अगर मेंस में 600 टॉपिक हो जाए तो मेंस करीब करीब कवर हो जाता है, एंड 500 टॉपिक्स आर देयर व्हिच इज़ वेरी डायनामिक इन द सेंस दैट डिमांड्स a very solid understanding, update, etc. And approximately you can say 80 to 100 topics are there, which is somehow you can say static in nature, very static nature, and very basic. Be it some parts of the geography, be it some part of art and culture, be it some part of society, etc. And paper 2, paper 3, paper 4, etc. And some of the paper section of paper 1 includes and it completes the 500 topic. So if you go by this, then it makes a complete, you can say, the structure that these are, you can say, the framework of the main examination. यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ खत्म करेंगे, हम अपडेट करते रहेंगे, लेकिन मेजर स्ट्रक्चर यही होगा, क्योंकि सिलेबस तो यूपीएससी हर साल चेंज नहीं कर रही है ना. Interesting. Now we have completed, you can say, our mains crash course. Fine. There also we did the same thing. And interestingly, if you look at the last 2.5 years, contemporary issues, not current affairs, contemporary issues related to everything, you will find that hardly there are 400-500 topics जो 2 साल के issues को पूरा का पूरा cover कर लेता है. I am talking about the issues, not the events. जैसे पॉलिटिकल रिफॉर्म है, एक टॉपिक हुआ, उसी में एंटी डिफेक्शन भी आएगा, इलेक्शन भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें आप एक ही में कवर करते हैं, तो आपको लगेगा कि यार ये पूरी की पूरी खेली 400-500 टॉपिक के आसपास हैं. अगर ये 400-500 टॉपिक मेरा हो जाता है, इसका मतलब है कि 80-90% ऑफ द टॉपिक इज कवर्ड. व्हाट दे विल आस्क, व्हाट नॉट, वी डोंट नो, नोबडी नोस. It's very easy and fashionable to talk about this, because one of my student who happens to be you can say in selected candidate, और वो एक टेलीग्राम चैनल भी चलाता है which is very popular. तो उसने मुझे बताया कि सर आई एम गोइंग टू रिलीज ए प्रोबेबल 100 क्वेश्चंस. तो हमने उसको पूछा कि भाई तुम्हारे रैंक इतना नीचे क्यों आया, जब तुम इतना ज्ञानी हो, यू कैन प्रिडिक्ट, तो तुम टॉप कर जाते हैं ना. इट्स वेरी इजी टू टॉक अबाउट दिस 100 प्रोबेबल, 50 प्रोबेबल, XYZ, ये होता है, लेकिन होता नहीं. एग्जामिनेशन में वर्क नहीं करता है, एग्जामिनेशन में वर्क नहीं करता. इट नेवर वर्क लाइक दिस प्रोबेबल और XYZ. फाइन. So the point which I am talking about, misinformation and disinformation, we can talk about so many things, accountability, transparency, etc. And probably then if we have to talk, probably the way we should list it, I will talk about the cyber security. Now you may think of internal security also, it's a very important part of the governance. When you talk about the e-governance, does not mean only programs and policy, etc. Cyber security is very important part of the governance. We are talking about the governance. So there are so many things that you can talk about, not about the social inclusive or social equality or inequality or anything, social justice, that you will do, I know. My second point is concept building is basically to help you to understand that how do you create the issues is the second building block. That is going to help you to develop certain things. And third, an important aspect is basically the most important is interconnectedness. Probably this is most gray area I have found among the students. I have realized that here candidates are almost 100% sound. जितने भी कॉम्पिटेंट कैंडिडेट से मिलता हूँ, मुझे ये फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक में लगता है कि दे आर सुपर. They understand the basic issues, meaning they are capable to make the list. आप उसको सिर्फ clue दे दो and they are able to do it. They are good. You simply need a hand holding. Here I find the gray areas when it calls the interconnectedness. Now allow me to come to this point, expression. When you talk about the expression,
You cannot achieve this expression in the main examination until you have ability to develop common connections within the syllabus, across the syllabus, across the topic. Until unless you are able to do so, you cannot write a good answer. Interconnectedness नहीं होगा तो नहीं हो सकती है. It's here it comes. Now, why it is a gray area? Because books cannot do much about it. Here you will have to do one and only one thing, that how do you develop your ability of the critical thinking. आप critical thinking से ही interconnectedness develop कर सकते हैं, otherwise आप नहीं कर सकते हैं, नहीं होगा. क्योंकि कोई book ready-made इस तरह से आपको common connections develop करके कोई चीज़ नहीं दे सकती है. Interestingly, also one very important point, that if you talk to yourself, fine, you will find that somewhere you are very comfortable in reading, but whenever it you can say takes little bit effort to think, you avoid. It gives you immense satisfaction when you flip 5 pages, 10 pages, 15 pages. It becomes a very tangible outcome कि हमने इतनी पढ़ाई की. But when you have to reflect upon it, you think that it's a wastage of time. Wastage of time. आपको लगता है कि यार कि इसमें इतना सोचेगा कौन. हम अंडरलाइन करते हैं, पेज पढ़ते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन आता है कि यार आज 4 घंटे तो घींच दिया, हाँ पूरा घींच दिया, आज तो घींच के पढ़ाई की है यार. अगर यही स्पीड है तो 3 दिन में लक्ष्मीकांत खत्म, चौथे दिन में रमेश सिंह उठा लेंगे. वो तब तक तो यूपीएससी उठा लेती है, आ जाओ. तो उसका खेल ही अलग है. So the question is here, the point number 1, and this is why I am saying the perspective, and sorry, this is what I am saying framework. This is what the gray area is. And the fourth important point where you will take edge is perspective. Perspective. Fine. Perspective simply means that what is your clarity about the opinion, and also that you know how others are seeing this topic. For example, allow me to come back to the point. I was talking about the governance itself. Now, if you see the governance and the good governance, you will find that there are various ways to see it. From the point of view of the World Bank, though the idea of the governance and good governance is not new. Not new. And that is what the key difference between the Chanakya and the Machiavelli. Both are realist. Both are champion of the statecraft. But one talks about the good governance because he talks about the people. One talks about the character. One talks about the king has to be virtuous. But Machiavelli doesn't. Machiavelli कहता है कि भाई पावर में रहने के लिए लॉयल्टी के बदले डिसलॉयल होना है, हो जाओ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता. Important is that you need to remain in the power. Remain in the power. Machiavelli says appearance is more important than the actual. आप तो पॉलिटिक्स में दिख भी रही होगी. Appearance is more important than the actual. And this is what the today's politics is all about. Appearance is more important than the actual. Fine. And so everyone tries to enforce and establish, नहीं साहब जो दिख रहे हैं वही हैं भी. This is what is called the narrative building. But that's keep aside. Let's come to the point. So the perspective. So if you look at, come back to the point of the governance and good governance we were talking about. So we can think from the perspective of, in the historical context, number 1. We can think, we can see, we can understand from the perspective of the World Bank also. World Bank और IMF की है, और बहुत हद तक जो आप स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम की बात करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो इसी की तरफ इशारा कर रहा है कि साहब आपका गवर्नेंस का फ्रेमवर्क और पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, तभी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट होगी, और व्हेन इट विल हैपन देन ओनली विल गिव यू द फंड. बट दैट्स अनदर थिंग. सो देन यू कैन टॉक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द वेस्ट. वेस्ट, यूएसएसआर कोलैप्स किया, वेस्ट ने अपना मॉडल ऑफ गवर्नेंस ला के खड़ा कर दिया कि हम तो कह ही रहे थे साहब ये कोलैप्स कर जाएगा, देखो हम लोग कितना सॉलिड चल रहे हैं हमारी इंजन, और ये तो सिंगल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की है भी नहीं, फिर भी मस्त चल रही है अमेरिका की सरकार. उसने डेमोन्स्ट्रेट किया वर्ल्ड को, वर्ल्ड ने लिया उसको. फाइन. देन कम्स द मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट.
Neoliberalism is all about this, that market is all about the governance. Market is pro people. This is what they claim. Whether they are or not, that's different thing. I don't want to go into this. And then they say that government should be the facilitators. Government should be the facilitator और market service provide करेगी ना साहब. Market है ही क्वालिटी लेके आएंगे ना. तुम्हारा VSNL से अच्छा चलेगा जियो, चला रहा है साहब. Market claim करता है और प्रूफ किया उसने. Fine. So there is a perspective, you can say, of the market also. Market also. So the question is here that when we do any topic, when we talk about the concept, this is the first framework. When we talk about the concept, it's very important that you should finish anything from the point of view of the perspective, that how do you see how the worlds are seeing this. So when you say the concept, उसका फंडामेंटल अच्छा है. आप लोग भी आपस में बात करते हो ना, उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, उसका फंडामेंटल अच्छा है. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय इट. इसका मतलब क्या है साहब. जब हम कहते हैं फंडामेंटल अच्छा है तो समझ में तो आना चाहिए ना क्या फंडामेंटल अच्छा है. तुम बात अच्छा कर लेते हो, ठीक है, तुम भाषण अच्छा दे लेते हो, तुम्हारा लैंग्वेज अच्छा. व्हाट इज मीन बाय दिस, व्हाट इज मीन बाय दिस, व्हाट इज मीन बाय दिस. सो द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू से, व्हेन यू से कॉन्सेप्ट, any topic, it has to be in and around the four things. The point number one, the big picture you are able to see, you are able to list the issues. Number three, you are able to develop the interconnectedness. And number four, the last and the most important thing is basically that you have your opinion, perspective, vis-a-vis you are able to see the other's perspective also. So these four things helps you to understand any topic, be it preamble, be it probity, be it globalization, be it India Pakistan. क्योंकि ये जब चार चीजें अगर आपके पास नहीं है तो आप यहां नहीं पहुंच पाएंगे. By end of this session we have to reach here, and then you should be in a position to count 1, 2, 3, 4. You can dedicate some time after this session, whenever you get time, today or tomorrow. You can reflect for half an hour. That to account कि हमको काम करना कहाँ का है. If I am able to do this, if I am able to contribute, if I am able to help you, then the purpose of this session is served. Otherwise, I consider it as my personal failure. क्योंकि सवाल ये है कि साहब अगर आधे घंटे, एक घंटे का टाइम देने के बाद if I am not able to make the structure very clear, what we are doing here, भाई उसका क्या मतलब है. उसका अगर वो पर्पस सर्व नहीं कर रहा है तो चाय पे चर्चा तो इसके बाद भी हम लोग कर सकते हैं यार. तो पर्पस वो नहीं है. सो दिस इज पॉइंट नंबर वन. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड एस्पेक्ट. Second aspect of the main examination preparation is basically integration. When I say integration, simply means that you have to see everything in the framework of three things. So the point number 2 is integration. Fine. If you look at the one issue probably which because of which probably many of the candidates are not able to do good despite they are good, is there are so many parallel tracks on which you people used to work. Fine. एक तरफ आपकी static study चल रही है. Static study in the sense some or other books you are reading. एक तरफ कोचिंग चल रहा होता है, ठीक है. एक तरफ करंट अफेयर्स चल रहा होता है एक ट्रैक पे. फाइन. सो यू डू करंट अफेयर्स बाय वेरियस मीन्स. पहली डिलेमा तुम लोगों के पास होती है कि हिंदू पढ़े कि एक्सप्रेस पढ़े. ये भी एक डिलेमा है. आई डोंट नो क्यों है, लेकिन बहुत से लोग क्या पढ़ें. पढ़ो मत पढ़ो क्या फ़र्क पड़ता है. पढ़ोगे कोचिंग का मटेरियल ही बाद में, एंड विच इज़ नॉट गुड टू बी वेरी फेयर. क्योंकि ओरिजिनल सोर्स आर ओरिजिनल सोर्सेस. दैट गिव्स यू बेटर इंसाइट, दैट गिव्स यू द एबिलिटी टू थिंक. वो तुम्हें थिंक करना सिखाती है. एंड दैट्स व्हाई आई फिनिश विद द पर्सपेक्टिव. That's why I finished with the perspective, and I am very blunt in that area. It's not like that I am standing on the podium of the GSS course, so I always say in coaching institutes are like the God's creation or something like that. It's not happen. It's a market creation. So it's a very simple. So the issue is basically what problem any institute, any faculty, any material is able to serve or not. It's as simple as anything.
सवाल इसका नहीं है। आपके पास 500 रिजल्ट है, 600 रिजल्ट है या 700 रिजल्ट है, उसे हमको क्या मतलब है भाई? मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। कोचिंग जितना क्लेम करती है सारे रिजल्ट को जोड़ दो, 10,000 क्रॉस कर जाए। भारत सरकार ताला लगा दे डीओपीटी में? नहीं, जितना इंस्टीट्यूट अपना रिजल्ट क्लेम करती है 500, 600, 700 ऑफ 800, 738 ऑफ 900, नहीं ऐसे याद आता है ना? तो दो सबको जोड़ो, 10,000 क्रॉस कर जाता है वो। तो डीओपीटी में ताला नहीं लग जाएगा? बोले जब तुम ही लोग सब करो तो मेरा काम ही क्या है? तुम ही लोग सेलेक्ट करके लवासना भेज दो सबको। बट anyway, why I am saying this all these things? Because this is what you do for current affairs. नहीं, बहुत लोगों को देखो, जैसे करंट अफेयर्स में तुम क्या करते हो भाई? अगर डेली करंट अफेयर्स पढ़ना हो तो इनसाइट पे चले जाते हो, वीकली करंट अफेयर्स पढ़ना हो तो जीएसएस कोर्स से डाउनलोड करते हो, बिकॉज वी डू वीकली मैगजीन। मंथली करना हो तो विजन से करते हो, यही करते हो ना सब, इधर से इधर से। मुझे एक बात बताओ यार, यूपीएससी का इसका क्या लेना देना है? यूपीएससी का क्या लेना देना? यूपीएससी को इससे तो मतलब नहीं है ना यार। सम और अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट विल डू सम और अदर थिंग्स टू सर्वाइव, करेगा ही करेगा, तो बट नेचुरल सी बात है। उसके ट्रैप में स्टूडेंट को फंसने की क्या जरूरत है? उसका कोई सेंस तो बनता नहीं है। हमको तो सिर्फ ये देखना है कि भाई कि हमारे फ्रेमवर्क में कौन सी चीजें कहां फिट बैठ रही है। इफ समथिंग इज सर्विंग ए वेरी गुड पर्पस देन इट्स ओके। इफ merely it is free and downloadable, it does not mean it is going to serve your purpose. क्योंकि जब तुम पढ़ाई स्टार्ट करते हो और जब तक तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट होती है, तब तक तो तुम 100 जीबी तो डाउनलोड कर चुके होते हो, कर करके जिसे कहते हैं ना पूरा टेलीग्राम को दूह लेना कि हाँ ठीक है भाई यार, दूह लिया, 100-150 जीबी तो निकाल लिया हमने। भाई क्या फायदा है लैपटॉप लेके 500 जीबी का खरीदें और डाउनलोड भी ना करें। बट एनीवे, सो इंटीग्रेशन सिंपली मीन्स दैट 3 थिंग्स should be in a sync. Number 1, fine. So it should be the first thing first is the concept, or you may call it a static portion. Fine. Second thing is updation. How do you update? And third is assessment. I am not using the word test series. Assessment. Fine. Assessment. So let's talk the example of groundwater. Groundwater. Fine. Fine. Now, if you go for the groundwater, fine, you read about so many terms: water table, aquifer recharge, etc. सारे वर्ड आते हैं ना इसमें, बहुत सारे वर्ड्स आते हैं इसमें से। फाइन। एंड देन ऑल्सो यू कम अक्रॉस अबाउट द current affairs that despite having so much or heavy rain, there are so many areas which is completely, you can say, the groundwater problem is very perennial and consistent. Despite heavy rain. It may be because of the high surface runoff. Fine, surface runoff. There may be some geographical or more important geomorphological reason. So when we say updation does not mean that something happened now. Something is in news that you should take care of it. You should make some sense of it. Fine. Either it is the landslide, and then how do you correlate with the development, infrastructure development, etc. At the same time, that rainfall is very high, but there are certain regions that despite having very high rainfall, still you will find the problem of water is still there. Let's take the example of Chota Nagpur Plateau. Let's take the example of many regions of the Dharwad region. Fine, Deccan Plateau. Deccan Plateau के बहुत सारे regions में आप देख लो कि same area है, same problem है, और आपको other areas में भी मिल जाएंगे. And interestingly, then you are able to develop a common connections and update yourself कि fine boss, जहाँ भी igneous rock है यहाँ ज़्यादातर problem दिख रही है.
चाहे छोटा नागपुर हो, चाहे डेक्कन प्लेटो हो, चाहे कहीं भी हो, it's there is a common connection that wherever igneous rocks are there, and especially if there is a silica content and silica content is high, then there are certain water problems there are problems of underground water. Aquifer recharge की water table की problem है. Fine. This is what is called the updation. Updation does not mean that certain issue happens and then you list it. It may be some historical context, it may be some geomorphological context, it may be some economical context जो resurface हो गया है, जो resurface हो गया है, and you should take notice of it. I repeat my sentence that you should take notice of it. So updation simply means what you should take notice of it within the framework of the syllabus. कि हम किस चीज का नोटिस लें. It's not about something happened today. ये पुरानी भी कोई चीज हो सकती है, ये resurface करके आ गई है, simply. And then the assessment. Why I say assessment here? Because assessment simply means here that whatever you do, you should be in a position to do something with this information, this content, as far as this examination is concerned. Number one. Number two, when you say answer writing, mains, etc., always take my word, it's very gradual. Improvement is very slow. It's very incremental, and that's why if you do bit by bit, then probably here the chances are very high to maintain the consistency, to become the spontaneous, because you have to write for 21 hours, and that we do in the class. If you talk to any student, you will find that relentlessly we used to do the practice. The issue is that how capable you are to take best out of me, so that I can take best out of you. जब engagement ही नहीं होगी तो how I can take best out of you, best out. तो आप तभी ले पाते हैं ना जब एक constructive engagement होती है. Then only you can pick out of it. So here assessment simply means that I always say that look at any athlete. He or she go to the track every morning, not for the gold, for do one and only one thing. He or she goes to the track to manage 1 or 2 seconds, to finish the things, because one knows that if I manage these 1 or 2 seconds, gold is mine. तो वो हर दिन fight कर रहा होता उस 1 या 2 सेकंड को मैनेज करने के लिए. Assessment is this only, that you know exactly what to do. It's not about answer writing. I'm coming to the point of how you need to do, what to do, etc. सिर्फ आंसर राइटिंग लिखने के लिए नहीं है. Because in ORN, and also you can say the UPSC, I see that most of the time you lose your thinking, you lose your originality. Either because of the influence of the coaching institutes, or you can say social media, or the topper, or anything else. So the noise is so high, so that you can say you are hooked. You are completely hooked in that noise. I don't want to take the name. A girl is writing her 3rd mains. तो वो यहाँ पे एडमिशन लेने से पहले सी केम टू मी, उसने बताया मुझे कि सर कि मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं और ऐसे मार्क्स इम्प्रूव नहीं हुआ. सो शी वॉज टॉकिंग टू द अंबिका रैना, 164 रैंक शी वॉज हियर, और उसको मार्क्स इम्प्रूव किए हैं, 110 नंबर उसका इम्प्रूव किया अप्रॉक्सीमेटली लास्ट अटेम्प्ट से, इसलिए इसका इस बार रैंक है. अगेन शी इज डूइंग, एंड सो शी आस्क्ड मी टू टॉक टू यू. मैंने जब उसके हमने कहा कि तुम लिखना स्टार्ट करो, बाद में बात करेंगे, बिकॉज वी आर कथावाचक्स, तो बोलोगे तो रात भर बात करेंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है ना यार. इफ सम कॉन्क्रीट टेकअवेज आर नॉट, देन क्या बात करेंगे, क्या फायदा. तो बात करते रहो. अपन इंडिया में तो ऐसे भी इस चीज़ के लिए ट्रेंड है, बाय बॉर्न. कुछ आता हो नहीं, जो बात तो तुम जितना कर लो, इसको हिंदी में हम लोग बकैती बोलते हैं, जितना कराना करा लो भाई. सोशल मीडिया पे आने के बाद वो निखरने लग गया है क्वालिटी. बहुत लोगों की क्वालिटी वो निखर के आ रही है, और उसमें सेल्समैनशिप भी आ गई है. When I corrected her copy, I called her and I simply asked that how you can commit such a grave mistake in your 3rd attempt. She told me, sir, that I am doing this XYZ because there are so much of the narrative and discussion in the social media,
And that's why I am doing this experiment. So I said, then what you have learned from your last 2 attempts? भाई तुमने attempt दिया, तुम्हारा UPSC का marks है, you have some direct experience, then how you can do such blunder? But this is what is happening. You are hooked in the noise. So a basic problem is that when you write this examination, when you do this examination, you are not you. Either you are quote unquote a coaching institute which gives you a template. ठीक है कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो. For example, in essay you will find that lot of talk is in around the anecdote. एक word चलती है, दिल बैठ जाता है यार, घबरा जाता हूँ. मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं गुलजार या जावेद अख्तर या संजय लीला बंसाली तो नहीं ढूंढ रहे हैं. एनेक्डोट, स्टोरी टेलिंग, एनेक्डोट. अरे यार क्या कर रहे हो? There are 1,000 students, there are 1,000 ways. It's very simple. You go to our website, you will find some 100 students, you can say score more than 140 or 150 or approximately 160 in the essay. There are 1,000 students, there are 1,000 ways. As simple as anything. The question is whether you are effective or not. That is something that we need to discuss. हम टेम्पलेट कैसे बनाएंगे यार? कोई जिलेबी थोड़ी बनाना है कि गोली बनेगा, लंबा जिलेबी नहीं बन सकता. वहां तक तो समझ में भी आता है. और फैशन के वर्ल्ड में, ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में वो बोले क्या क्रिएटिव यार, सीधा जिलेबी बनाया है. ठीक है, अच्छा है, सब क्रिएटिविटी इसी का नाम है. तो क्रिएटिविटी और एडवेंचरिज्म और नॉनसेंस, तीनों का फर्क ही खत्म हो गया. तीनों का फर्क खत्म है. तीनों का फर्क खत्म है. और इसी को बोलते हैं इंस्टा लाई. जहां पे आप, so anyway, so my whole idea is basically to talk about the assessment, that here whatever you do, you please assess yourself. And that's our basic idea, that do assessment as quick as possible, as regular as possible, and there must be some context. ये नहीं है कि हम पढ़ कुछ और रहे हैं, क्वेश्चन कहीं से PDF का कहीं और डाउनलोड कर रहे हैं, क्वेश्चन कोई और सेट कर रहा है, कॉपी कोई और करेक्ट कर रहा है, डिस्कशन कोई और कर रहा है, तो पूरी एफर्ट जा कहाँ रही है पता ही नहीं चलता यार. Some or otherwise everything is going, and we are counting on the fingertips कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया. So my second point, coming back to the point, that integration means these 3 things. Then I will quickly close this, and then I will start taking your questions. Third important aspect is retention. Fine. So when we say retention, retention starts with the clarity of the concept. Clarity of concept. Retention does not mean you create a very beautiful notes and then you can retain something. No, not at all. It never happens. Fine. But we are trained to make a very beautiful note. Good not good notes. Beautiful. देखोगे तुम लोग उसको बनाते हो, 3-4 हाइलाइटर रखते हो, एक यहाँ रखते हो, एक यहाँ फंसा रखते हो, ठीक है, और फिर अंडरलाइन करते हो, ऐसे 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 करके करोगे, फिर एक ऐसे कर रहे हो. ऐसे लगता है जैसे यहीं से डायरेक्ट लवास ना पहुंचोगे तुम, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा. अरे इट्स वेरी सिंपल, दैट वेदर यू हैव द कंसेप्चुअल क्लैरिटी और नॉट. नंबर 1. नंबर 2, द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ द नो इज दिस, इज नोट्स. Is notes. Now, if notes is not very you can say crisp, as short as possible, and if it is not in your language, you can say, you cannot do anything. It has to be in your language. If it is not in your language, nothing can. You cannot reproduce it. That is the biggest mistake. हम बुक से बुक बनाते हैं. We create book out of the book. While making the note, we create book out of book. We create current affairs. You can say newspaper out of newspaper. लिखा, underline किया, कट किया, चिपकाया, लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, बुक किताब से बना रहे हैं. At the end of the day, you will find that your notebook is very good. है ना, Reliance Trend की तरह देखने में लगता है कि very fancy something. किसी को दूसरा को दिखाओगे, अगर बगल तुम्हारा रूम पार्टनर है, पीजी में वो देखेगा तो वो गिर जाएगा. अरे हम तो कितना वीक है यार, क्या नोट्स बनाया. हाँ, बात तो सही है, सब देखने में तो अच्छा लग ही रहा. फाइन, पूरा का पूरा ठीक है. नोट्स हैज टू बी इन एंड अराउंड. योर नोट्स शुड ऑलवेज
take certain things. Number one, that as I discussed, the first thing first is concept, which I have already discussed, that what is meant by concept. Fine. So you somehow here it is also a test of quality of understanding, clarity. क्योंकि एक टॉपिक सब टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, अगर सब टॉपिक की करें तो 2 पेज से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 2 पेज से ज़्यादा कर रहे हो तो आप सोचो ना, सब टॉपिक में, टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ, तो सब टॉपिक कितना ज़्यादा हो जाएगा यार, कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि रिटेंशन तो है ना. तो समवेयर यू विल हैव टू फिक्स कि 2 पेज में हमको निपटानी है. एंड हियर कम्स द क्वालिटी ऑफ द लैंग्वेज. इफ़ यू हैव दैट लैंग्वेज देन ओनली यू कैन फिनिश सर्टेन थिंग्स कि हाँ ये 2 पेज में मैं इसको कंप्रेस कर सकता हूँ, कंडेंस कर सकता हूँ, स्ट्रक्चर कर सकता हूँ. क्योंकि वो टेम्पटेशन और वो भूख जो है ना इंफॉर्मेशन कंपाइल करने की, वो कहीं ना कहीं पे रहेगी, क्योंकि आपको लगता है व्हेन यू रीड यू थिंक दैट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. एंड सो समहाउ दिनेश, some or other how you will find some or other things or most of the things are important. 1 2 3 4 आप कंपाइल करते चले. You will have to take a call कि हमको 2 पेज में एक टॉपिक खत्म करनी ही करनी है, चाहे whatever it takes. Again I am saying I will remind this क्योंकि पहुंचना यहीं पे है. अगर हम हर चीज को स्ट्रक्चर नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं, एक फ्रेमवर्क में नहीं कर रहे हैं, तो एंडलेस है ना यार, एंडलेस है. So the first thing first is concept. Number 2, very important, data, facts, cases, etc. I tell you another thing which is going to be one thing. Probably this is one of the biggest gray area of the students. अगर आप मेंस के एग्जामिनेशन का शीट निकाल के देखो, you will find that they have already qualified preliminary examination. Preliminary exam data ही data. They are not able to reproduce it. They are not able to reproduce it. Some or other, they are writing some other things. Until unless answers are not substantiated, you will not take the edge. You will not take the edge. And coming to the point where I started, that this examination is all about 1.5 marks. Either you lose or you gain. This is what the main examination is, because the competition among the candidates is so close कि आपको हर क्वेश्चन में लीड लेना पड़ेगा, ये माइंडसेट डेवलप करनी पड़ेगी, तभी जाके कुछ होगा. अदरवाइज इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट. फाइन. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वेश्चंस. इट्स नॉट अबाउट PYQ. It's basically your ability to think around the you can say that topic, so that you can frame questions. Actually, when you frame question, you start becoming analytical. You start being more and more, you start critical thinking. क्योंकि तब आपका दिमाग लगने लगता है कि यार किस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हो सकता है. एंड इन द बिगिनिंग इटसेल्फ आई टोल्ड यू दैट द होल आइडिया इज दैट टू बूस्ट योर सेल्फ स्टडी, टू मेक योर सेल्फ स्टडी मोर आउटकम ओरिएंटेड. क्योंकि कोई भी कोचिंग हो, कोई भी टीचर हो, कोई भी कोर्स हो, अल्टीमेटली अगर वो सेल्फ स्टडी को हेल्प कर पा रहा है तभी उसका कोई मतलब है. मतलब और एडवांस कोर्स तो मैंने पहले भी कहा कि इट्स नॉट फॉर द फ्रेशर्स, बिकॉज इट विल गो वेरी डीप. सो द क्वेश्चन, सो योर नोट्स शुड कंसिस्ट ऑफ दीज थिंग्स, एंड देन योर टेस्ट इज वेदर यू आर एबल टू मेक एवरीथिंग इन द 2 पेज और नॉट. दैट आई विल गिव यू ए सैम्पल. मैं सैम्पल कुछ बनाया हूँ, मैं आपको दे दूंगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ यू कैन ईजिली collect the things and all. A structure is nothing. A structure is all about 2 things. Fine. In the answer writing, or you can say let me come to the now expression. Fine. So the final thing, allow me to come to the expression, the last thing. Fine. So when we say expression, outcome, again there are 4 things that you will have to take care. Fine. This I have already discussed in some other session also. A structure में यहीं ले लेता हूँ. So when you say expression is consist of 4 things. This 4 thing. Again I am saying you, in the beginning itself I discussed and I talked and I deliberated that
that the whole idea is basically to help you to understand that how to do everything in some framework, to know where to work exactly. Fine. Because expression, and to achieve expression, we talk a lot about the answer writing, but what you do in the answer writing. Fine. There are 4 things that you have to test. There are 4 things that you have to achieve. There are 4 things that you have to become the competent for. Number 1, the first thing first is clarity, in the sense whether you are able to understand the question or not. So it's basically about understanding the central demand. Central demand. I am not doing this exercise today because it will become a very detailed session, because answer writing itself with this framework I used to do a lot. फिर हम लोग कभी करेंगे क्योंकि वो 2, 2.5, 3 घंटे लगता है उस सेशन को करने में. We'll do some other time. So it's basically about central demand. Relevance is all about 2 things. Your answer, dimensions plus examples. So any answers, relevance is basically the second aspect in the answer, is dimensions and the example here. Third very important aspect is analysis. Analysis of what? Analysis of this. Fine. So this is, you can say, the third important aspect in everything that you will do. And fourth is a structure. A structure is about 2 things. Number 1, ordering. How do you organize your point? Number 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ordering. And then the logical correlation. Logical correlation. So these are the 4 things which basically help you to make you good in terms of the expression, and expression is the final output. So when you say the output, this is what does mean by output. ये 4 चीजें जब आपके आंसर में आने लग जाती हैं, then it is a quality answer. It's very easy to talk, and that's why I started with the concept, because if conceptual clarity is not there, then clarity in expression you cannot achieve. If there is no retention, you cannot achieve the clarity. क्योंकि ultimately आपको 20 घंटे में वो सारी चीजें लिखनी है ना. You need to be spontaneous. So this is what I wanted to deliberate with you, that everything, please try to understand that everything try to create in terms of the framework, a structure, so that you know while answer writing, while developing the concepts, कि साहब मेरा common connections हम नहीं develop कर पा रहे. Let's talk about that. Let's do about that. Something about this. We are not able to develop a perspective. Let's talk about that. Let's do something about that. For example, you should know in the answer writing that I am very good in capturing the dimension or relevance, but I am missing the logical correlation. Let's talk about this. Just talk about the logical correlation rather talking about the answer writing. हम specifically बात करें ना, if I work here, then probably I can shift from 30% or 35% to 40%, 45%. क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है. बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देख रहा हूं जिनको यही नहीं पता होता है कि जब मेजर मिस्टेक हो तो पता चल जाती है, लेकिन अगर बहुत छोटे छोटे मिस्टेक्स हो जहां पे आपको हाफ मार्क्स 1 मार्क का फर्क पड़ता है, देन यू डोंट नो कि वेयर एग्जैक्टली टू वर्क. हम वो 1 नंबर और पाने के लिए करें क्या, हम क्या करें. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कॉपी करेक्शन करता हूं तो मैं बहुत कंजर्वेटिव रहता हूं, एंड आई कन्वे टू द स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं आपको खुश नहीं कर सकता. मेरा काम खुश करने का नहीं है. फॉर एग्जाम्पल वन कैंडिडेट कॉल्ड मी विथ माई नेम ऑनली, मनोज फ्रॉम हैदराबाद, कि सर की मार्क्स बहुत कम है, आई एम फीलिंग डिमोटिवेटेड. मैंने कहा उसको क्या, कैन अंडरस्टैंड, बट माई टास्क इज बेसिकली टू टेक और हेल्प यू टू टेक द करेक्टिव मेजर्स रादर देन टू मेक यू हैप्पी. क्योंकि 2 ही तरह के फैकल्टी होते हैं दुनिया में, एक जो आपको एग्जामिनेशन के पहले अच्छा लगता है, दूसरा जो एग्जामिनेशन के बाद अच्छा लगता है. There are only 2 kinds of mentors. One keeps you happy before the examination, and other makes you happy after the examination. So it's very easy for me to make you happy before the examination. It's very easy, but it's not the real purpose. क्योंकि 250 में से 200 दे दो, हमको क्या मतलब है. बोलो तुम बताओ, 250 में 250 देना, वो भी दे देंगे.
ठीक है, 1 नंबर भगवान के लिए छोड़ना है तो 249 ले लो, जो बोलो कर लेंगे, but will it serve the purpose? Will it serve the purpose? So basically the whole intent was basically, allow me to conclude and then start the question answer session for this, that the whole idea was basically to just talk on one and only one thing and conclude that please try to develop a capacity, orientation to see everything in a framework, and this is how you can develop framework, and this is what it is going to be, you can say the course or the session also. So this is what about the advanced learning, advanced teaching, advanced practice, or whatever term you use. So now you can ask questions. Please go ahead. पूछो. See, it's not about history, I tell you. Thankfully, I was talking the same thing to some student yesterday only. She is saying that she has some kind of dislike for some subject. It happens. And allow me to be very candid with you. Same thing happens with me also. With me also. For example, whenever I read medieval history, तो थोड़ा धीरे हो जाता हूँ यार. और ये आज का नहीं है, जब मैंने अपना अटेम्प्ट दिया था 1995-96 में, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत आते थे. सो वी वेर रीडिंग सम, यू कैन से द अग्निहोत्री की गाइड आती थी, बहुत मोटी थी, सम 1400-1500 पेज की होती थी, तो वो हम लोग जो ऑप्शनल वाले पढ़ते थे वो पढ़ जाते थे, क्योंकि क्वेश्चन ही आते थे. आउट ऑफ 150 देयर वेर सम 40-50 क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री, और बहुत फैक्चुअल होते थे. अकबर का चाचा का नाम क्या है, मामा का नाम क्या है, टाइप से. तो मगअप करने के अलावा कोई उपाय नहीं है उसमें. अब चाचा का नाम में कहाँ कॉन्सेप्ट ढूंढे. पानीपत की लड़ाई पानीपत में क्यों हुई, तो वहाँ तो कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन चाचा के नाम में कहाँ से ढूंढोगे कॉन्सेप्ट. लेकिन ऐसे होते हैं. द इशू इज बेसिकली दैट some related question one girl has asked on the online, sorry, it's not girl, sorry, Niranjan, that how to remember data statics is again a big problem. किसी को मेडिवल हिस्ट्री की डेट परेशान करती है, किसी को इकोनॉमी की डेटा परेशान करती है, किसी को ज्योग्राफी परेशान करती है, किसी को इतना आर्टिकल क्वालिटी में मगअप करना है वो परेशान करता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कहाँ मगअप करेगा, किस आर्टिकल में फिट करें. यस, इट्स देयर. प्लीज, इट्स इजी if you start seeing everything in the context. Whenever you have to mug up certain things, you will feel the pain. You will feel the pain. So everything has some or other stories, whether it is 1857 or 1920, fine, or 47, or economic data, or IPCC report, or XYZ. You will have to develop a habit to see the things in the context. That context, why I say that whenever you see any fact, figures, event, everything, always do remember that you find facts always are embedded in the context, in the concept. So when you develop a habit like this, then you are able to memorize certain things, and then these events, facts becomes little bit easier to digest. लिटिल बिट ईजियर टू डाइजेस्ट. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपका एक सब्जेक्ट से एवर से है, इफ़ यू हैव सम डिसलाइक, तो वो अचानक से इस सेशन के बाद लाइक बदल जाएगा कि नहीं अब तो हिस्ट्री में गदर काट देनी है, अब देखते हैं या तो मैं ही रहूँगा या विपिन चंद्रा रहेंगे. इट नेवर गोइंग टू हैपन, टू बी वेरी वेरी फेयर, नेवर हैपन. बट प्लीज डू वन थिंग, दैट एवरीथिंग यू ट्राई टू सी इन द कंटेक्स्ट, यू विल फाइंड लिटिल पेन. यू विल फाइंड लिटिल पेन. तुमको लगेगा कि यस, slightly there is an improvement some or other way. So this is something I would like to say, क्योंकि ये है, मेरे साथ भी है. फैक्ट आते ही
मेडिवल हिस्ट्री के ना मेरा दिमाग घूम जाता है, और आई एम ए वेरी वरीसियस रीडर। मेरी पूरी लाइफ की अर्निंग का एक हिस्सा सिर्फ किताब में ही जाता था। मैं उसको बचाने के लिए बहुत कोशिश किया। मेरे कुछ एक दोस्त है यहाँ पे, गौरव, ही टेक्स इकोनॉमी, उसने मुझे किंडल गिफ्ट किया, सर इस पे पढ़िए। हमने कोशिश की, वो हैबिट ही नहीं डेवलप हो पा रही है यार, किंडल पे, पैड पे, मोबाइल पे। वो टच एंड फील जो बुक का है ना, है तो है। बट एनीवे, सो प्लीज गो फॉर इट, ask as many questions as possible, please, very quick, then we will wrap up the issue. Go for it. Any other question, please? Sir, how to integrate the topics from the syllabus within the syllabus? Pardon? How to integrate the subtopics in the question from the syllabus you said you were talking about? See, what I did, Harsil, one student, Harsil Kotak from online, is asking the same question. Can we provide the list of the 500 topic and also some related issues? See, it's already done. That list I can provide you. That all the issues also, 500 issues, and how it covers the 80% of the syllabus or more than that of the main examination. And as far as common connections is concerned, that comes with the you can say the discussion. The reason is, as I discussed, that how you can correlate with the rainfall in one region with the another region with the geomorphology of that region vis-a-vis the igneous rock and the silica content or XYZ. Fine. So this is something that happens with some discussion and through some reflection. I tell you one thing, which I did one experiment in you can say at the GS score, and it went successful. It went successful. What happened that you will never ever find me talking about any book. तुम कभी भी किसी ने भी आज तक मुझसे इंटरेक्ट किया हो, कभी भी कोई भी स्टूडेंट सेलेक्टेड नॉन सेलेक्टेड राजेंद्र नगर में ऑनलाइन में, मैं कभी भी किताब का नाम नहीं लेता हूँ. Never, you will never ever see me taking name of any book. Any book. I always say whatever you have, it's sufficient. The challenge is, can you take best out of it or not? अगर एथिक्स की कोई चीज पढ़ रहे हो, वो बेस्ट है. मेरे मुंह से तुम कभी सुन ही नहीं सकते हो. I challenge, I say on this public platform that you will never ever see that I have ever used the word कि ethics का notes GS score का पढ़ लो. No, not at all. What I did, that to develop that content and eventually everything through the thinking. For example, this year I tell you one thing. जब क्रैश कोर्स मैंने मेंस का खत्म किया, I realized that some or other things are missing in the student. Now the question is how to help them. I cannot say कि मैं notes दे देता हूँ. I cannot say कि ये किताब पढ़ लो. It's not a good suggestion. It's not a practical solution. क्योंकि मैंने कहा ना, इस सेशन के बाद भी ओनस मेरे ऊपर आती है, whether this session is constructive or not. That responsibility I have to take. And what I did, simply, I will give you that question. For example, in Essence of Ethics, I created 50 questions, 1, 2, 3, 4, 5, and I simply wrote think without ink. Reflective exercise. You simply think. सारा दिन आप अपना ऐसे ही रखो, ठीक है? उसमें 15-20 मिनट के स्पॉट आइडेंटिफाई करो, जहाँ पे आपको लगता है कि खाली है. हम कर सकते हैं, इम्बेड करो उसको, एंड जस्ट यू सी द क्वेश्चन एंड रिफ्लेक्ट, थिंक 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, दैट्स इट. फाड़ के फेंक दो उसको, हो गया काम. That will help you to visualize. That will help you to, you can say, do the value addition, and it will help you to recollect and organize everything. हम लोग के यहाँ कंटेंट की दिक्कत नहीं है, आप लोग के यहाँ कंटेंट की दिक्कत नहीं, कॉन्फिडेंस की दिक्कत है. हमेशा ये लगता है कि नहीं जानते. अरे कैसे नहीं जानते यार, इतना मेहनत दुनिया में और कौन करता है, मुझे ये तो बताओ. किसको देखा है? देखा है किसी को? किसी को देखा है इतना पढ़ते हुए जो हड़प्पा सिविलाइजेशन से 21st सेंचुरी तक नाप दिया हो? कभी देखा है किसी एग्जाम में? बताओ. तो फिर कंटेंट कैसे नहीं होगा, इंफॉर्मेशन कैसे नहीं होगी? सम और अदर थिंग्स वी हैव टू डेवलप सो दैट वी सी द थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्किल रादर देन द इंफॉर्मेशन. So the point where I wanted to bring, that this examination is more about knowledge plus skill rather than the knowledge, and this is exactly what we are going to do in the class, in this session or in this course also. It's not only about in knowledge plus skill में जाना पड़ेगा. क्योंकि ये मेरे लिए सजेशन देना बहुत आसान है कि वो किताब देख लो, लेकिन ये सजेशन अच्छा नहीं है ना साहब. So please do the value addition through these kind of reflection, thinking, value addition will help you wherever it's needed.
So this is my suggestion. Please go ahead. More questions? Sir, my question on updating the notes. So while reading newspaper and any other sources, we get a lot of things. For example, like about climate change, or monsoon changes pattern, its impact on agriculture. So I found a lot of examples, a lot of case study. So where to take a pause, it is enough, and I can go with it. Because whenever I read, I feel this should I note down, this I should note down. So examples आती रहते हैं. What's your name? So Manish. So Manish is saying that where is the full stop? That's a big question. And this is what I was saying, that the whole purpose of this framework is basically that you need to know कि इसी framework में ही हम काम करेंगे. I will not replace anything. कि ये छोड़ के ये ले लो, ये छोड़ के वो ले लो, not at all. See, somewhere you will have to learn one thing, that fundamentals are you can say, you cannot change the fundamental every time. You cannot build a concept every time. You can simply update certain things. So that updation will keep on going, Manish. ये एग्जामिनेशन के 5 दिन पहले 10 दिन तक पहले तक चलेगी अपडेशन. So updation is something different. Updation is something different than the concept. So as far as concept is concerned, I have listed that there are 4 aspects, and these are the 4 things that you have to do in and around most of the topics. Updation चलेगी दोस्त. Updation चलेगी. But as far as issues are concerned, again I am saying, मेरे पास लिस्ट है, मैं लास्ट 2 years के आपको टॉपिक की लिस्टिंग दे देता हूँ जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज है, एंड यू विल फाइंड दैट सम 400-500 टॉपिक्स आर देयर. वही टॉपिक किसी न किसी कारण से न्यूज़ में रहती है, एंड इट बिकम्स, यू कैन से, रिसर्फेसिंग, वेदर इट इज इलेक्शन, वेदर इट इज इलेक्शन कमीशन, वेदर इट इज हेट स्पीच, वेदर इट इज गवर्नर, वेदर इट इज यू कैन से एंटी डिफेक्शन. महाराष्ट्र में हुआ, सब लोग कह रहे हैं बिहार में भी हो सकता है, वी डोंट नो. तो फिर न्यूज़ में आएगा, फिर स्पीकर का रोल आएगा, फिर ओबियस है, बट ओबियस है. इसी तरह से अगर तुम देखो तो एंड अगेन क्लाइमेटिक चेंज इज इन न्यूज़, बट देयर आर ओनली 5 and 6 aspects around the climatic change. If these 5-6 aspects are done, it's done. IPCC रिपोर्ट अभी आए, नेक्स्ट ईयर आए, फिर जैसे भी आए, उसमें कुछ डेटा ही चेंज होगा और कुछ होगा नहीं. फंडामेंटल्स विल रिमेन सेम. So my suggestion would be here that please look at the fundamentals, and then for updation don't worry for that. मैं अभी जैसे इस एग्जामिनेशन के टाइम पे भी मैंने कई लोगों को मैसेज किया कि डोंट गो फॉर यू कैन से स्टडी प्लान, रादर गो फॉर द रिवीजन प्लान. टेक द करंट अफेयर्स मटेरियल, चाहे जिसका भी हो, चाहे जीएस स्कोर हो, विजन हो, जो भी अच्छा लगता हो, एंड जस्ट फ्लिप इट एंड सी व्हाट इज देयर टू ऐड. पढ़ो मत, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तुम पढ़ चुके हो. वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो बार बार यू अगेन एंड अगेन रिविजिट द थिंग्स. सो समवेयर यू हैव टू आंसर इट कि नहीं, ये तो मेरा किया हुआ, ये नहीं किया हुआ, और समथिंग न्यू इट अपियर्स टू मी. उसको काट लो, उसको फाड़ लो, उसको चिपका लो, उसको राइट डाउन कर लो, जो करना है करो. सो समवेयर यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन that these are the 4 aspects which I discussed. This is something done, and then as far as updation is concerned, it's a continuous process, because you don't know what news, what issue will resurface again. So be open for that. Even if you have done last 2 years contemporary issue, you will find that there you don't need to again update again and again. तुमको लगेगा कि अच्छा ये तो किया हुआ, ये तो किया हुआ, ये किया हुआ, सिर्फ ये डेटा ले लो, सिर्फ ये डेटा ले लो, या ये एक लाइन है जिसमें एक पर्सपेक्टिव दिख रही है मुझे, क्योंकि इशू तो वही है, इशू वही है. एनीवे, प्लीज अनदर क्वेश्चन. यस. क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करते हैं? मतलब सारे टीचर एक ही बात करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग में स्टार्ट करो, बट उसके बारे में कोई बात नहीं करते किस पॉइंट से स्टार्ट करनी चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग. सी, व्हाट्स योर नेम? विकी. Rocky, Vicky, these are very good names, हैं? Sunny, हाँ ऐसे ऐसे कुछ नाम है, अच्छे हैं. कॉलेज में बड़ा पॉपुलर नाम है ये सब. अच्छा, हाँ. अच्छा, ये हमको पता नहीं था यार. ये अच्छा किया तुम भी कुछ पर्सपेक्टिव दे के जा रहे हो, हम भी कुछ लेके जा रहे हैं. मतलब विकी नाम हो तो लास्ट में कॉपी चेक होता है. अच्छा, ऐसा भी है. तो जोहरा जिसका नाम होगा तो सबसे लास्ट में होगा. हाँ, अच्छा क्या बताया. See, is talking about the critical thinking and all. Critical thinking is basically that when you start examining certain things, you don't take it simply on its face value. Rather than you examine,
you question, you introspect, or you develop certain curiosity. So that's how it happens, and you start probing in and around that topic. Fine. And this is how you start thinking, or you can say, see the topic beyond the apparent meaning. I repeat, beyond the apparent meaning. So critical thinking is basically without doing additional, you can say, the reading text or anything else, you think and you try to understand the underlying meaning also. For example, if I say, then let me answer to his question, that what does mean by critical thinking? I simply say, suppose if I give you a topic, and the topic is very simple. When one has to think, why not think big? This is a very simple topic. One has to think big. Why not think big? Now, there are several meaning of the bigness. Big. There are many big in our society. विजय माल्या भी big होंगे किसी के लिए, fine. और big भी तो है ही, और big boss तो बैठे ही हुए हैं अभी, fine. वो तो 2024 में अनाउंस कर दिया उन्होंने कि अभी सुपर इकोनॉमी हम लोग बनने जा रहे हैं, तो बिग बॉस अनाउंस किया ना अभी उन्होंने. बिग बॉस मतलब वो वाला सलमान खान वाला मत सोच लेना, इंडिया में एक ही बिग बॉस है अभी, तो ऐसी कोई गलतफहमी मत रहना. अभी उन्होंने अगला भी घोषित कर दिया है अभी. तो द पॉइंट इज हियर. So you are not taking it as an apparent meaning, rather you are questioning, you are probing, you are understanding some or other issue through probing, examining, etc. This is what is called the beginning of the critical thinking. And that's why you will find that, let me come to the one point, that you must have seen in certain question, the indication or the direction is given that critically analyze. Do you know what is mean by it? Critically analyze simply means that there are certain points of disagreement in the question. It's very simple. कई बार होता है ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सिंपल है, that there जहां भी critical analysis किसी भी question में लिखा हो, it simply means that there are certain points of disagreement that you have to find and you have to answer it whether you agree or disagree. This is what the critical analysis is. As simple as anything. इसी को हम लोग इतना, जिसे हम कहते हैं ना भौकाल मचाना, वो मचा देते हैं. आसान बनाओ यार. Whole strategy and the preparation is to make easy. So critical analysis simply means easy, that there are points of disagreement, whether you are able to reach to that point or not. This is what the taste of that question is. This is what the illustration, discuss, उसके बहुत सारे हैं और बहुत सिंपल है वो, लेकिन उससे आपका क्वेश्चन का डिमांड नहीं बदलता, लेकिन स्ट्रक्चर बदल जाता है. Some or other how the direction is changed, even if the question remains same, structure will change. But anyway, so please. Himanshi is asking how to assess our answer. Himanshi, I have already discussed on the basis of these 4 points. Here it is written. So this is my answer to you. Let me take. Yogesh is asking how to answer based on the need of the question. Discuss, explain, comment. This is what Yogesh I am talking about. Please give me some time. We'll take a different session or dedicated session. I was talking to her also on the answer writing. We'll do something for that. Yes, please go ahead. आप कुछ पूछ रहे थे. So the final thing that we have to do is expression. Yes, expression. What's your name? Nitesh is saying that final thing is expression. Expression is the output. It's very simple. Expression is the output. ये तो दीवार पे लिख के चिपका दो. Expression is the output. और उसके कंपोनेंट है, उसके फिक्स करेंगे हम. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4. यस. That expression, what I think is, will depend upon the 2 pager notes that I have created for each topic. So मैक्सिमम. अगर एक पेज में हो सकता तो नथिंग लाइक दैट. So at the end of this course, I will have around 300. नहीं प्रभु. ऐसा मत करो यार. सो ये अब वो वही मोदी जी वाला हाल कर रहा है कि आपने कहा था 15 लाख रुपए अकाउंट में आएगा, आया नहीं. तो अब ये कह रहा है कि सर आपने कहा कि हर सब टॉपिक पे एक पेज का होना चाहिए, तो इसका मतलब है कोर्स खत्म होने के बाद 300, 400, 500 टॉपिक मतलब 500 पेज में नोट्स हो जाएगा और हम मेरा काम हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट. आवर वर्क इज नॉट डू. माई टास्क इज बेसिकली टू ऑफ दिस कोर्स. नितेश, यू प्लीज डोंट गिव योर टास्क टू मी. वो तुम्हारा काम है.
So please try to understand. My job is not to enter into class and do the spoon feeding, because he is saying कि sir class के this at the end of this course 500 पेज का नोट्स, 500 टॉपिक, 500 मगअप कर लिया, खत्म. अब टिकट किस में लेना है ये बताइए. मसूरी जाने का, ट्रेन से जाना है, वोल्वो से जाना है, अपना ओला बुक करना, ऐसा नहीं है. सी वेरी सिंपल नितेश, that we are going to cover, you can say, the entire syllabus except few very minor topics. That's it, that you can do your own. Number one. Number two, that we will do in the weekends. So with that, entire weekdays you are free either to dedicate to the preliminary examination or optional or revision or whatever you do. Fine. We are doing this course for last so many years. It's not new for us. It's not new for us. Fine. Yes, doing in the weekends is new because a lot of time pressure is coming to do in the weekends, so that you can say weekdays में हमें sufficient time मिल जाए और बहुत आराम से हम लोग इसको 5.5 months में approximately will finish it, approximately. So you have enough time. So the whole idea is basically that we'll take care of the preliminary exam, main examination in the weekends. You take care of the rest of the things on the weekdays. Very simple. We'll make sure that your syllabus is done, concept is there, perspective is there, and massive answer writing is done. Massive answer writing means massive answer writing is done. This is what I can promise. Rest you have to take care of all these things कि हम उसको अपने लैंग्वेज में नोट्स घर पे कैसे बनाएं और एटसेट्रा. नोट्स का मतलब आप ये मत सोचो कि नोट्स बनाने का मतलब यही है कि हम उसको सजा सजा के लिख रहे हैं. आप पढ़ रहे हैं, राइट हैंड साइड पे वाइट पेज लिया, आप लिखते चले जा रहे हैं, उसका क्रक्स लेते चले रहे हैं. दैट्स इट. नोट दैट इटसेल्फ इज अ नोट. नोट बनाने को हम लोगों ने एक टास्क क्रिएट कर दिया है, कोट अनकोट, कि आज हम नोट बनाएंगे. इट्स नॉट ए सेपरेट थिंग. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इट्स बेसिक नॉट नोट मेकिंग. यू शुड डेवलप ए हैबिट ऑफ नोट टेकिंग. 1 2 3 बुक पढ़ रहे हैं, 1 2 3 1 2 साइड में वाइट पेज रखा हुआ है और हम उसको कोई डेडिकेटेड टाइम नहीं दे रहे हैं कि 2 घंटा आज हम नोट्स बनाने को दे रहे हैं. नो, प्लीज डोंट डू दिस. तो ये है. सो यस प्लीज. Sir, I want to ask what is the ideal time of taking mains test series? Like, should we do it side by making our concepts clear and integrating it with our current affairs, or should we just complete the whole syllabus, have our precise notes and integrated as well, and then we start taking mains? What's your name? Pradyum. Pradyum. Pradyum, see, there are two things. As far as your question is concerned, if I am correct, then you are talking about the test series. See, if it is test series, then you should do only when your syllabus is completed. But if it is an assessment, then there is no need for this. Because if you look at this course also, if you look at other courses also, what I do, there are two parts. For example, let's take the integrated test series we used to run. There are two parts. One is very small test. It's not a test series. It's basically 5 questions. 25 question of PT. एक topic हो गया, FR हो गया, FR पे test कर लो. But when it talks about the full test series, then in any case, if you have not done your syllabus, don't do it. It's a wastage of time, wastage of money, wastage of resources. No second thought of. So my answer to you, Pridman, there are two things. One is gradually improvement and then enter into the test series. And then another thing is you are only talking about the test series. So that's why I always use this word assessment. I never use this word test series. Test series I tell you one thing. Test series is not for the you can say the practice. Please, I repeat my sentence with full responsibility that test series is not for practice. You do practice with the question, but whenever you go for the test series, mock, you should enter to perform. There is a difference between practice and perform. Take a mindset कि yes, अब मैं perform करने के लिए घुस रहा हूँ. Practice हमने किया. जब आप mock के level पे, test series के level पे, उस level पे, full test के level पे जाते हैं ना, then don't go for practice, then go for perform. And then when you are going to perform, to test whether you can perform or not, it does not, it needless to ask कि अगर prepared नहीं है तो हम नहीं जाएंगे. So my answer to everyone, please try to understand that there is a difference between practice and perform. You practice, continuous practice, so that you perform. You set a target. For example, you when I'm talking about this course, you should take a target कि this date I will write mains.
मैं हमेशा कहता हूं, सभी को कहता हूं कि अपनी स्टडी टेबल पे सिर्फ एक डेट लिखो कि इस डेट को हम मेंस लिख रहे हैं. इन द मंथ ऑफ दिसंबर, इन द मंथ ऑफ जनवरी, गिव ए डेट टू योरसेल्फ कि इस डेट को मैं लिखूंगा. विल गिव यू द फुल टेस्ट, गो एंड राइट. लेकिन वो डेट आपके टेबल पे, स्टडी टेबल पे होना चाहिए. वो इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप और वो ब्राउन पेपर, वो सब ठीक है, सिलेक्शन के बाद यूट्यूब पे चिपकाने के लिए ठीक है. पहले वो डेट डाल दो कि इस डेट को तो हम मेंस लिखेंगे. वट एवर इट टेक्स आई विल राइट मेंस. स्टडी टेबल पे बैठ के मेंस लिखूंगा, मैं मेंस लिखूंगा. एंड दैट यू हैव टू रिमाइंड एवरी डे दैट आई एम टेकिंग. एंड देयर दिस स्ट्रक्चर विल वर्क फॉर यू, बिकॉज यू नो यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे यहाँ काम करना है, मुझे यहाँ काम करना है, मुझे यहाँ करना है, यहाँ काम करना है. एंड देन एवरीथिंग इज टेंजिबल. द होल आइडिया ऑफ डिस्कशन इज बेसिकली, दिस डिस्कशन इज बेसिकली टू मेक एवरीथिंग टेंजिबल. जैसे आपने क्रिटिकल थिंकिंग का बताया ना, वो एकदम टेंजिबल बनाना होगा कि वेदर आई एम एबल टू डू दिस. क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब है ये कि क्या हम पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट खोज पा रहे हैं और प्रूफ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. एज सिंपल एज एनीथिंग. चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो कॉलिजियम हो, या कोई और भी इशू. whether I am able to do to find that point of disagreement or not, whether I am able to examine or not, whether I am able to reach to that point or not, yes or no. It's very simple. So Sehali and other, I have not cleared prelims. Can I join the advanced course? Of course you can join. Kajol, oh, private list. Okay. You will get the list, Kajol, of the topic. Don't worry for that. Thanks. So allow me to finish now. Whatever question you have, हम सेशन के बाद भी मिल सकते हैं. And anyone in the online, fine. If you want to talk, office will connect with me. Fine. We'll connect and discuss. Don't worry for that. Fine. Thank you very much. Thanks. Thank you very much. Thank you.